Namaste to everybody out here. I said namaste. And happy to be here for the seventh edition. I had the privilege to be here on the first edition of GTM and second, and this is the seventh. Congratulations to the team and the core team, which actually took a lot of effort to make this as a journey for last 6 years, and this year being the seventh year. Probably maybe I think मेरे को नीचे बुला रहा है. Okay, so मैं नीचे आ जाता हूँ फिर. Okay, I'll come down. Don't worry. It'll take some time to settle down. Uh, but I think it's a privilege to see many known faces, and good to be here again at Indore. Probably yesterday I kind of got a lot of gyan again about Indore on 5 or 6 important the way the garbage disposal happens here. I think that was something which was my new learning for this year, this visit, because every time when I come here, I try to explore. And also, probably the second important thing is the Sarafa market or Sarafa. So probably I think that's again something which is very, very new experience. But there are 2, 3 new versions of stories which I kind of learned from Indore. How people actually created, and this became the business hub. Probably somebody gave me a gyan that there's the only city which never sleeps. Then I said, no, there is a city in Madurai which also doesn't sleep. So probably every part of the country we find something unique happening. And thanks to you and thanks to GTM for giving me the invitation out here. And particularly thanks to Indrapal Kaur. She met me at the conference at Mumbai and she said, "Aap aate nahi hai." मैंने बोला आप invitation दो आ जाएंगे. But then the problem is that they have a fixed program on 29th and 30th har saal, and 29th happens to be my wife's birthday, and I have promised her that I will not leave her on, at least on birthday, with the kind of job what I do. So thanks again. And thanks to again, I should say Mahakal and other Maheshwar Aris to be precise. So कुछ तरफ साड़ी का कुछ तरफ बोलते हैं ना spiritual aspects and कुछ तरफ education aspects, I think, was something which was very, very important. So thank you once again. I missed yesterday Balas's session. Again, I consider him as my guru because somebody who talks straight, and we go long, long, long way together. Our engagement has been. And I missed out his opportunity because I had to go to Ujjain yesterday. But I overheard his presentation on the live session with Kala ma'am was trying to do. I kind of heard. And I think he started his session by saying topic was not right, if I'm correct, right? So that's his thought process. But again, I think each one of us have something unique. Each one of us are contributing to the cause of education. I think that's one reason that I'm here. It is not that the people on the stage only can talk about it. It's not only you never got an opportunity. Maybe you get an opportunity. You may do a better presentation than me. But I think it's equally important for all of us in this particular hall also to make sure whatever avatar we play. I'm making it very clear. Whatever avatar we play, the basics have to be right, which is all about being a teacher. There can be multiple titles which we can give in terms of facilitator, mentor, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं. The person who has fire in the belly, willingness to learn, will surely make an impact. Will make an impact. And for this, learning can come from anywhere. It need not be, we need to go to Finland, we need to go, I think I need to get down, just give me a minute. Yeah, so I think it's important for all of us also to understand this particular perspective that learning can come from anywhere.
I don't know how many of you, when you were coming to this particular conference, when you walked in, what all did you observe? What all did you observe? And what do you think you can give back as a feedback to Father to make sure? Just check if the second mic is on. Just leave only one mic on. That should be good enough. Okay. Yeah. How many of you will walk back to Father and say, Father, thank you very much for hosting us, but these are some of my observations. Can I help you to do better? Now, this is something which we are very, very shy of. This is something which we are very, very shy of to tell people कि आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं, provided you do these one or two, three things more. I think that's what a teacher is supposed to do when he or she is in a classroom with the children, with the parents, with the community, on the streets. It's very, very important. The driver who drove you, when I came for the first or the second trip to, I think it was NDPS, when Winston had called me, that was the first time when I came into this particular city. And Winston said, Aajao, so then I came and went back. And the second day morning, I still remember when I was doing the session there at NDPS, I told him, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रैफिक मेरे को तब आश्चर्य हुआ कि we were walking on the streets, पानी पूरी वाला पानी पूरी देने की और आदमी जो ले रहा है रिसीवर एंड गिवर के बीच में से यदि कोई गाड़ी निकाल ले जाए तो कितनी बड़ी आर्ट होगी देखो उसके पास. तो that was something which was very, very interesting observation मेरे लिए, because यदि मेरे it's very difficult for somebody to do it. And the driver जो बेचारा मेरे को लाके ड्रॉप करके गया, he was coming on the right side and this fellow was coming on the wrong side. He stopped, parks his bikes and comes and argues with him. देख के नहीं चला सकता. So now that was something which was a good learning. So there is something called as every gully, every nukkad, every classroom, every vatavaran gives us learning, provided we are willing to hear, see, observe, assimilate, and then contextualize to the environment wherever we are. And if we are able to do that, I think we have done our bit. We have done our bit. We don't have to go and change the world. आपके पास 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 65 बच्चे हैं. अब तो सीबीएसई ने 40 भी कर दिया. तब आप बोल भी नहीं सकते. आपका इकोनॉमिक्स पूरा बिगड़ गया स्कूल का, मुझे मालूम है. So it is very, very important for us to understand कि in a given environment, how do we observe, learn, take back, adapt, and contextualize. If you are not able to do this, I think that no learning process is complete. बाकी इसके अलावा बाकी जितना भी बोला जाता है ना, all this is only English or vocabulary. आप उसको डिफरेंशिएशन कह दो, डिफरेंशियल कह दो, एक्सपीरियंशियल कह लो, एक्टिविटी बेस्ड कह लो, कुछ भी कह लो, फ्लिप कह लो. थैंक्स टू कोविड हमने शब्दावली हमारी आर वोकैबुलरी ऑल्सो हैज इम्प्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बड़ा आइसोलेटेड है. व्हाट इज आइसोलेटेड है? पहले अकेला रहता था बेचारा, अब उसको आइसोलेट कर दिया गया. Suddenly we have acquired a new vocabulary, but we have not been able to understand the meaning and the purpose behind it, and that's something which is very, very important. So when we try to talk about education particularly, but in that very particularly school education, I think the best skill set is कितना observe करते हो, कितना observe करते हो. जितना observe करोगे उतना resilient learning community बनाओगे. So the first and the foremost thing, before I get into my slides showing you what I have learned across the world, I think it's a very, very basic thing. Observe, think, react. React how you will take this observation into your classroom or to your kitchen or to your personal and professional life.
Because if you are not able to contextualize to your personal and professional life, no observation is of any use. No observation is of any use, because at the end of the day, each one of us sitting in this particular room have been given a nickname. All of us have been given a nickname by our students, by our colleagues, by our staff members in the campus. कभी प्यार से कोशिश करो कि आपका ओरिजिनल निकनेम क्या है. जैसे ही आपने निकनेम आपको अपना निकनेम पता चला, मेक लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट कैरेक्टर. जैसे उसके आप एट्रीब्यूट्स बनाओगे तो पता चल जाएगा कि लोग आपके बारे में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड दैट गिव्स यू द स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी to improvise on. Otherwise, resilience will not happen. Please understand, to become a resilient learning community, to make a resilient school, do we have a process? Do we have an approach? How will we become resilient? जैसे कई लोगों से पूछा जाता है ना कि शादी के कितने साल हुए, तो जो 5 से 10 साल वाले बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है. 10 से 15 के बीच वाले से पूछ के देखो, डायलॉग में थोड़ा सा फीकापन नजर आएगा. फिर जैसे ही आप 30 के ऊपर पूछो तो बोलेगा सर एंजॉयिंग. दोबारा 0 to 5 था और 30 प्लस था ना, इन दोनों के एक्सपीरियंसेस. एंड क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ही हैज गॉन टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेज, बिकॉज देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लोर. और 0 to ये जो 5 है यहां पर एक्सप्लोर ज्यादा करता है. तो एक्सप्लोर करते 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 उसको ये अनुभव हो जाता है कि अभी ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, इतना ही है जो है. सो द होल अप्रोच हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्कूल्स टू. ये पर्सनल लाइफ नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है. स्कूल के साथ भी ऐसे होता है, आपके साथ नहीं, स्कूल के साथ भी ऐसे होता है. 0 to 7 years for a teacher or for a school, they want to experiment everything on the earth. 7 से 14 कंसोलिडेशन. 14 के बाद मेरे अलावा इस शहर में कोई नहीं है. जैसे जो लोग ज्वाइन हुए थे, जब वो रिटायर होना शुरू होते हैं उस स्कूल में, दैट इज 50 साल बाद या 40 साल बाद, जब स्कूल का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, and you get new sets of bahus coming into family, and the number of bahus is more than the number of nanads in the campus, automatically learning process starts again. You need to understand this particular perspective very, very clearly. Even schools also, we do the same thing. नया कुछ नहीं करना है, इतने साल से चल रहा है, सब कुछ ठीक है, अब नया क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा. Start observing around. And for that, I love to use this example, something called as Brahma. ब्रह्मा के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? चारों तरफ आंखें रखो. Understand stakeholder needs and expectation. Understand what the stakeholder is getting experienced outside. But come back and play with the white daddy. What is that white daddy? Wisdom. जितना अनुभव है, इस अनुभव को उस वाइट दाढ़ी, जो वाइट दाढ़ी वाले लोग काफी कम बोलते हैं. सॉरी, आपको नहीं बोलो, जनरली बोल रहा हूँ सारे. यहाँ भी कुछ है एक दो, तो ओके फाइन. तो ये लोग कम बोलते हैं. मैडम वो तो मेरे को पूछना पड़ेगा कितने साल हो गए शादी के लिए. ओके ओके सर, देन इट्स ओके. सो ऑलरेडी इन अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेज. Now the very important point here is that we really need to be looking the eyes and ears open, but we need not speak. We need not react. There is a Professor Y.S. Rajan, who is again, I don't know how many of you know him, the co-author of Vision 2020, and he is with the former President Kalamji. He has written again a next book, Beyond 2020. That's again something. So whenever we will be sitting in a discussion, he's my mentor, so he will start scratching his dadi, and I'll say, sir, koi idea to nahi girne wala? So then he will say, ruk, tere ko baad mein batata hu. So when I'll finish my presentation, then he will do left, right, and center. He will give me gyan. He'll say, bas iske liye aaya tha. So that means he is putting you to do more
than what you have planned and got. Now, this is where what happens, the experience what people have is important, but they have observed many set of people. It is like on a corridor, when you see some of the senior teachers standing and seeing some young teacher, जो अभी 6 महीने 8 महीने हुआ है, और उसके चारों तरफ बच्चे काफ़ी बोलते हैं ना मक्खियों की तरह भिन भिना रहे होते हैं, और ये सारे सीनियर टीचर पर होते हैं। एक ज़माना होता था। अब क्या हो गया? क्योंकि अब हमने कई बैच आफ्टर बैच, बैच आफ्टर बैच, बैच आफ्टर बैच देख लिए, इसलिए कोई चीज हमें नई नहीं लगती है, मोह माया है। क्योंकि जो चीज अब आपको नहीं मिलती है वो हमेशा मोह माया वाली चीज है। तो ये सारे फेसेस हमने देखे हैं। ये कॉरिडोर में नहीं, स्टाफ रूम में जब लोग बच्चे आते हैं, प्रोजेक्ट डिस्कस करने आते हैं, आपने ऑब्जर्व किया ना, तो ऑब्जर्वेशन हो रही है, लेकिन we have never taken effort to convert that observation into an opportunity. So when we are trying to talk about building resilient learning communities, we really need to understand this particular point very, very clearly, that we are talking about is given environment mein, how will we make our learning community strong. What's happening? Just touch the slide. एक बार touch करो. Just touch the slide for a moment. एक बार हाँ छोड़ दीजिए. No. उसको connect किया. After the quick, brief, intro on what I'm going to kind of expose, thank you very much once again, GTM, for getting me here. And best wishes that when you celebrate your 10th, please do let me know. I'll surely love to share some of my thoughts at that particular time. I think the same statement I told you when I came for the first one. And I stand, not working. Okay. Okay, so first of all, let me start my standard presentation, standard slide. Disclaimer that ideas, suggestions are purely coincidental. यहाँ पे किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर बात नहीं की जा रही. Researchers, it's not a legal advice, it's not anything. Whatever you think, observe, go back, understand, then adapt. Don't blame me or my organization per se. Today's topic is also something like this. This is a visual which I picked up from one of the Korean community centers. And today's topic, when I was kind of thinking on it, it is something like this. We may have to rewind few things, we may have to stop some of the practices, we may have to forward some practices, we may have to record some practices. Not only this, we may have to reject some of the practices. And I love this particular, image from Korean, one of the community centers during the November visit of mine. And I think that's what I said, कि जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, और ये टॉपिक ऐसे ही है. Normally people ask me this particular question when I started going to Finland. I think 7 times gone there, and this year I also had the opportunity to share my experiences with the Finnish education minister when she was in India to promote Finnish education. She met a lot of people, and I got the opportunity for one of the dinners to basically share with a closed group of people, to share some of my thoughts. And in this particular thoughts, she said, I'm looking forward to hearing your presentation. And I had shown this particular slide in that particular program too. And this question regularly people keep asking me, क्या Finnish education India में हो सकता है? And my answer is very, very simple. One, why is it delay?
The first and the foremost thing I tell people, इंडियन टीचर से फिनिश एजुकेशन एक्सपेक्ट मत करो. यू नीड फिनिश टीचर. खाली फिनिश टीचर की जरूरत नहीं है, बट व्हाई इज द डिले? इस वाले को निकाल के Okay. Standard technology problems, don't get worried about it. So one of the first things which I love this picture also, because when I go to any of the Finland schools, I love this example of putting the year and who are the people who are teaching for that particular academic year. हमारे स्कूल में मैगजीन के लिए एक फ़ोटो निकालना हो तो 4 लोग एब्सेंट हो जाते हैं. तो यहाँ पर प्रॉब्लम ही, सबका पासपोर्ट साइज फ़ोटो देखो, प्रॉब्लम ही नहीं है. कोई गया भी तो दूसरा फ़ोटो वहाँ लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इट मेक्स लॉट ऑफ प्राइड दैट व्हेन आई वॉक इनटू द प्रिंसिपल्स रूम, द प्रिंसिपल वेरी कॉन्फिडेंटली सेज, इस टीम के साथ मैं काम करता हूँ. एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट? डिजिटल फोटोग्राफ हर स्कूल में, मोबाइल पे ले लो, स्टैंडर्ड साइज, ईयर चेंज करो. कोई 4 लोग गए, निकाल दो, अगला साल चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? बट इट कम्युनिकेट्स टू द होल वर्ल्ड कि दिस इज द टीम द प्रिंसिपल इज वर्किंग विद. सो वन ऑफ द की लर्निंग्स अगेन फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो गोइंग बैक अगेन टू माई क्वेश्चन कि फिनलैंड से आपने इंडिया में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पहले यहाँ फिनिश टीचर होना चाहिए, और दूसरा वी शुड ऑल्सो हैव फिनिश सोशल स्ट्रक्चर. क्योंकि आज यदि हमारा जो वातावरण है, आप कितना भी अच्छा पढ़ा लीजिए, लेकिन मेरे को आते समय रास्ते में बताया गया कि दिस इज द हब ऑफ ट्यूशन सेंटर्स इन इंदौर. स्कूल वाले रोक नहीं सकते ट्यूशन सेंटर. आज भी आपका सैटरडे का शेड्यूल प्रॉब्लम में है. आज भी आपको सैटरडे, क्योंकि ट्यूशन सेंटर वाला सैटरडे एग्जामिनेशन करा रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम. सो दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट फेलो हु इज एक्सटर्नल. 11 साल बच्चा हमारे साथ पढ़ा, 10 साल हमारे साथ पढ़ा, या 12 साल बच्चा हमारे साथ पढ़ा, लेकिन एक ट्यूशन वाले ने 1 साल में बदल दिया. इसके लिए मैं आपको नहीं ब्लेम करता, मैं कम्युनिटी को भी ब्लेम करता. एंड दैट्स वेयर द सोशल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड which is very very important is the Finnish weather. फिनलैंड का यदि वेदर भी नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा. लोग बोलते हैं वहां पे हर पीरियड के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है. आप करके देख लो. फिजिकल एजुकेशन टीचर को वीजिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हर 15 मिनट में उसे लोगों को अंदर लेकर आना, बाहर छोड़ने में ही टाइम लग जाएगा. अच्छा, तो आपने बेल नहीं बजाया क्या? अच्छा, बस बीच में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है. ये भी तो अच्छा, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन which the weather also starts bringing in. The child lives
to school when the street lights are on. The child comes back to home when the street lights are on. Then obviously, child is not getting sun. So he needs to walk out and play in the sun to get the required heat for himself, herself, and then come back. And the teachers are free. That's why they allow them to play. हमारे में एक गेम्स पीरियड के बाद टीचर्स की नाक में दम हो जाता है कि बच्चे को रूटीन पे कैसे लेकर आए. अब ये साल खत्म होने को आ गया, मार्च में भी नया टाइम टेबल निकलेगा, प्रिंसिपल के कमरे के बाहर लाइन. क्यों क्यों बताइए? मेरा पीरियड लंच के बाद है, लंच स्पोर्ट्स पीरियड के बाद है. Now can you do that? Can you bring in that change? No, because we are not equipped. I'm sorry, we are not equipped to basically handle children post sports period or post or lunch break or जो भी break आपके पास होगा. Because this becomes a huge challenge. It becomes a huge challenge for us because we don't have the required skill sets. So when you try to talk about learning across the world, you also need to look at three important parameters. One is the school education system, the second is the social structure, and third is the weather. I was having a very interesting conversation with somebody, and very soon you will see, the people who follow me on Facebook will see, I may even like to have a conversation on this. कहीं ना कहीं पे एक ये बड़ी सोच आ गई थी कि क्या स्कूल यूनिफॉर्म में टाई और बेल्ट होना जरूरी है. आप बैठे हैं चेन्नई में, you're sitting in Chennai where the weather is hotter, hottest. There's no question of third level. वहां पर टाई के ऊपर हाफ कोट के ऊपर फुल कोट, और जूते पे लेदर शूज, और फिर उसके ऊपर सारे और जैसे ही बच्चा गेम्स पीरियड खेल के आता है, क्लासरूम में एयर फ्रेशनर की जरूरत पड़ती है. How many times did we even question that do we require such kind of a uniform? So we really need to think. On this particular point, that whenever we are trying to contextualize, we really need to be a little more cautious on, particularly post-COVID. Post-COVID, many things have changed in India. One of the very, very important things which got changed is like this. Now, if I go to any school, no, एक इतना ज्ञान दिया जाता है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी. भी आएगा, स्लाइड इज रनिंग. टेक्नोलॉजी इज एडॉप्शन इन स्कूल. खाली एक गूगल क्लासरूम, जूम या दूसरे जो भी टेक्नोलॉजी टूल्स थे, उसको यूज करके क्या आप अपने आप को टेक्नोलॉजी एनेबल्ड मानते हैं? That's where I think we really need to understand कि post COVID हमने कई practices ऐसे बना ली. कुछ किया नहीं किया, हमने एक नया concept introduce कर दिया, BYUD. What is this BYUD? Advertisements में देना शुरू कर दिया. That is called as bring your own devices. BYOD is nothing but bring your own devices. हम स्कूल वाले नहीं देना चाहते थे, हमने आपको बोला रिक्रूटमेंट में लैपटॉप नहीं तो एप्लीकेशन मत डालो. Is it an initiative from the school side? Is it an initiative from the change, from the real change what we wanted to see? No. People became experts on how to use PPT through a mobile, which I still struggle. I'm not ashamed of saying this. I can't share a presentation through my mobile. But I have seen teachers doing this during the COVID time. Fantastic. Please clap for yourself. कि उस कोविड समय पर हमने टेक्नोलॉजी काफी अच्छा किया, लेकिन स्कूलों ने उसके बाद ऐसे दिखाना शुरू किया. हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी लोग ऐसे क्या हो रहा था कितने स्कूलों में.
मैं भी कई स्कूलों के साथ काम किया, मैंने भी, I think I still remember I did a event for 9 days, a Navratra of pedagogical festival of pedagogies I did for 9 days at that particular time, and everybody was saying, how did you do it? I said, adapted technology, but we were that we will be able to drive it through aram se, and we took a risk and we did it. What I am trying to say कि टेक्नोलॉजी को, लैब को, आज AI मोस्ट abused term, CS is equal to actually AI. What is CS? Common sense is equal to artificial intelligence. Repetitive behavior of one particular pattern is only read by the technology and which is told to us as AI. So your students already across the years had very good AI. That's why they kept a nickname for all of us, including me. हमारे रिपीटेटिव बिहेवियर को जान जान के बच्चों के पास भी एआई काम किया. वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहाँ बच्चों ने. तो व्हाट इज एआई ऑल अबाउट? collection of data repetitively being done, helping you to take a decision so that you don't have to go back and do so much of calculation. So today it has become a white elephant. Atal tinkering lab. क्या कर रहे हो बे अटल जी? अटल जी तो चले गए. हमने खाली बोर्ड लगाया. सच सच अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि कितने लोगों को सेकंड इन्वेस्टमेंट मिला, थर्ड जो फंड आना था मिला? नहीं आया. क्यों नहीं आया बताओ, मुझसे पूछो. क्योंकि पहले दो के रिपोर्ट भेजे नहीं. सबसे इजी काम था सामान खरीद के लैब भरो और नेम बोर्ड चढ़ाओ. इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली बन गया, लेकिन उसको इंटीग्रेट कैसे करना है रूटीन में? इट इज लाइक दैट फूड प्रोसेसर विच मेनी पीपल बाय, बट केप्ट एट द शेल्फ की आपके यहाँ है. कैसे चलता है? किया था भी एक दिन कोविड के समय में, कोई काम धाम नहीं था तो हमने सोचा उसको ट्राई करके देखते. उसके बाद दोबारा वहीं चला गया, क्योंकि उसमें इतने पार्ट्स हैं, उन सबको असेंबल करने में इतना टाइम लगता है. यही अटल में होता है ना. अटल में वी आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट डोंट ट्राई टू मेक इट लाइक अ व्हाइट एलिफेंट. And don't try to create a way how it should be walking. If you never needed it, then why are you trying to even call about it? Now let me show you something. If you want to learn from other country, let me show you something very, very interesting. What is this? Any guess? It's a school in Finland, in Turku. But this particular school in 1970s, 1886 में बनाया गया था ये स्कूल. 1970 में ये स्कूल क्या बन गया पता है? That's a school name. Panimorivintola. Panimorivintola is nothing but today very restaurant. एक स्कूल आज ब्रेवरी बन गया है तुर्कू में. आप चलाएंगे? हमारे यहाँ का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कहता है कि 100 मीटर्स के आसपास दुकान ही नहीं. यहाँ पे स्कूल को ही ब्रेवरी बना दिया. ये भी फिनलैंड से है. ये सीखना चाहेंगे आप? नहीं ना. Now that's where I am saying it is not only about the observation, it's also about contextualization. If you are not able to contextualize, because this is the one city from where I learned there is a bank which has become a pub, there is a school which has become a brewery. So you go around the city, all the places, and the best thing is that the assembly hall is the biggest hall in this particular restaurant, जहाँ पर आज सारे ग्रुप इवेंट्स कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ. जो होता है ना 300 लोगों के लिए जो असेंबली होती है, that is there in this particular place. So go back and do a little research. Koulu, K-O-U-L-O. Koulu is basically school in any Finnish. It's a Finnish name for a school. आप इतना बोलो कि कोलू स्कूल डालो या कोलू बार डालो,
टुर्को इतना डालो तो आपको इसकी पूरी की पूरा वेबसाइट नजर आ जाएगा इस पर्टिकुलर स्कूल का। मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे शुरू हुआ था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये स्कूल एक ब्रिवरी में बदला। रशियन वार हुआ, रशियन वार में छत टूट गई, छत के बाद देखा गया कि बिल्डिंग सेफ नहीं है स्कूल के लिए, इसीलिए वो स्कूल बार बना। 5 मिनट पहले आपकी क्या सोच थी? क्योंकि आपके पास पूरा डेटा नहीं था। 2 मिनट में क्या हुआ, मैंने डेटा ज्यादा दिया आपको, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ अब आपको? दिस इज व्हाट यू एज ए टीचर आई एम सपोज्ड टू डू टू मेक आर माय कैंपस resilient. You can't just make a comment just by saying one particular part कि ऐसे ही होगा. That doesn't happen. Next important thing is that मेरे को भी किसी ने पूछा था. This is something which I just shared at our annual Sahodaya at Mumbai. Container classrooms. CBSE doesn't give affiliation for this building. And I think I had the privilege of sharing this presentation, this slide in front of the chairperson, Mrs. Chibbar, then Joseph sir, then Saha, and the complete team. All of them were sitting, and I told them very, very specifically कि आपको जो affiliation है, वो affiliation इसके लिए नहीं मिलता है. So if you try to talk about So it's very, very important for us to understand कि एक container classroom के लिए affiliation मिल सकता है कि नहीं मिल सकता. नहीं मिल सकता क्योंकि there is something called as NBC 2015, National Building Code 2015, and you can't get a clearance. But if I try to look at this particular school, which is quite beautiful, and further I will show you some more pictures from the same school. This is one more aspect. But then this was something which was very, very interesting for me. This is Bombay Signal School. एक स्कूल चल रहा है. So but you can't get, इस स्कूल को भी एफिलिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ बच्चे जा रहे हैं. But it is considered as safe. What can I say if somebody comes up something like this? What I'm going to show, this. This is the container stadium. वर्ल्ड कप सॉकर, वर्ल्ड कप का पूरा एक कंटेनर स्टेडियम से बना और डिसमेंटल भी हो गया. So what does this talk about? The purpose was very, very clear. The need. The need. And if I understand the need and the location of this particular stadium, go back and do a little research on some of these areas. Don't go by what I am saying. Go back and do a little research. Then you'll be able to appreciate what I'm trying to say. When you have to get the learning from other parts of the world, you should be able to appreciate how it got contextualized for World Cup. So we really need to understand these particular perspectives, and once we are able to understand, I think it will be great. I don't know how many of you know PISA. I have heard about PISA. PISA नहीं, PISA की बात हो रही है यहाँ पे. PISA में हमारे देश पहले यदि हिंदी में बोला जाए तो आज भी पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा ही बोलेगा. वो किस ओरिजिन से बात कर रहा है, that the tint of the language will always matter here. But what is very, very important is this particular assessment. 2005 as a country we were not able to do well. Nothing wrong, because that was the first time. The reasons may be different. But this is one assessment which is globally accepted. I don't have to, talk about it. But only thing which I can say in this particular forum, after 2.5 years of effort, finally PISA for schools, that is for private schools, country may not take part in this particular assessment, but private schools can take part in this particular assessment. And this year, July to September, this assessment will happen with private schools in the country. Now, why I am saying this is, as somebody who is responsible for getting this into it. It has not been a very easy journey, because everybody thought ये तो सारा का सारा इंटरनेशनल है. इंटरनेशनल नहीं है. थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको कि इसकी लर्निंग क्या है.
कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, जो मैंने बताया ना 7 to 14 वाला जो जर्नी मैंने बताया था आपको, वो 7 to 14 वाला जो जर्नी, उस फेस पे हम लोग हैं. एवरीथिंग इज फाइन अराउंड नाउ. And this is not only about India, this is the data from the globe. What does the global data says? Global data says, look at the image, you'll be able to say how much learning loss has taken place in India. How much of learning loss has taken up in India. And this is an eye-opener thing which I saw on Jan 19th and 20th when I was at OECD attending the 10th anniversary. I had this opportunity to see this slide. I said, this makes a lot of sense as a India. Look at the last, if you try to look at the whole number of percentage in India, as per NCRT data, we are only around 18 to 20% learning loss has taken place in India. So, because of non-access of technology and the material which was available was not of that particular quality, and that's why this learning loss has happened as per NCRT report. Go back and study the report, you'll be able to get. But when I use that 18 to 20% and then try to fit in here, I think India is much better than many other countries or many other cities. So what does it talk about? It basically gives us the perspective that how we are trying to do post-COVID and what we have started doing post-COVID. But during the COVID time, and this is all about mathematics, which we have loved, and this I can share the link with the organizers, they will share it with you. If you go through this, you'll be able to see where exactly different countries are there in terms of mathematics. Not only this, if you try to look at the country's performance post-COVID, look at the countries, how they have performed. And each one of these countries have not even crossed 380, 386, 392. Even OECD average itself is 449. And country like 427, Estonia, which is third or fourth in the list, is only able to score only 427 scores as a country. Now, this is the classic example of trying to understand that how much data helps us to interpret. Not only this, look at this particular data because this is what is important for you. कोविड के बाद या कोविड के समय में जो असेसमेंट लिया गया 2018 and 2022 में 3/4 of the year, that is 3/4 of the students in a year have not been able to acquire maths. And look at the first one. Look at the second one, reading. 2022 में it is almost like half people have not been able to kind of achieve, 50% off हो गया. And last में in science there is no significant purpose. But what came out in this particular research was fantastic. थोड़े समय से पहले हम हिस्ट्री टीचर से पूछते थे ज्योग्राफी, हम हिस्ट्री क्यों पढ़े, सोशल क्यों पढ़े, लेकिन जो नया क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के स्कूलों में भी ऑलरेडी आना शुरू हो गया, साइंस क्यों पढ़े, फिजिक्स क्यों पढ़े. This question has started already. You may not be able to say, go back and ask your senior teachers जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ के देखिए हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक एंट्रेंस लिखना है. The whole approach towards education itself is changing, and this is not only with India, this is global scenario. I'm not talking anything about only India, I'm talking from the global, and this is not my data, I've just done a cut and paste. जो मैंने कट एंड पेस्ट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं because you are trying to talk about something very, very, and if you try to look at the learning losses, how it has kind of started coming down, you can see कितना डाउनफॉल हो रहा है हर साल. Now this is again just to give you the perspective कि how the downfall in the education not only in India but across the world is happening. Around 16 country representatives से मैं अकेला मिला, को भी ये देखना था ना कि यदि इंडिया के प्राइवेट स्कूलों ने अच्छा करना है या इंडिया के स्कूलों ने अच्छा करना है पैसा फॉर स्कूल्स असेसमेंट में, तो उनके करके तो मैंने उनके चैलेंजेस समझने की कोशिश की. And you will be very happy to know that each one of these countries had minimum of 50% Indian students studying in that particular place. And the only reflection points which was disturbing me from Paris to Delhi and Delhi to Bangalore was only one. What I observed and analyzed was, हम वो वाला काम करते हैं जब एक पौधा लगाया उस पौधे की जड़ को बार बार निकाल के देखते हैं कि वो बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ. बच्चे के साथ हम ये कर रहे हैं जो कि बाकी कंट्रीज में खाली एनवायरनमेंट बनाया जाता है, हमारे साथ बच्चे के साथ छेड़खानी की जाती है.
And this is where I am hopeful, if NEP 2020 is implemented, the assessment practices will bring a huge shift in the country. यदि ये शिफ्ट आना है तो खाली पेपर से, सर्कुलर से नहीं आएगा. आप लोग जब बैठे हैं ना, सब लोग इस कमरे में, each one of you have to first अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. अपनी सोच को थोड़ा, जैसे ही आपने अपनी सोच बदलना शुरू किया, the results will be started visible. And this is what I learned. I'll just give you one example. UK के एक स्कूल से, प्रिंसिपल से मैंने पूछा कि what is the great thing? हम तो कुछ नहीं करा. We have 55% Indian students. Gujarati community students are there. That's all he said. Then I said, इसमें boys कितने, girls कितने? तो उसने बोला, as a normal interest, because PISA talks about gender sensitivity quite a lot. So I wanted to understand कि boys versus girls क्या है. They said it's the girls who are around 56% who are doing well. Then the boys who are, average जो आने के लिए, that's the percentage what's working. So what it basically means that Indian students going out in a given environment are able to perform better. So there's no problem with India. कहीं ना कहीं हमारे वातावरण जो हम बना रहे हैं ना स्कूलों में, I think we have to revisit that वातावरण. And if you're able to bring the shift in that particular वातावरण, I can tell you, we'll be able to see some fantastic results coming in. And to be very frank, I don't know, I made this comment in the conference hall. When I walked in, people said India has, Indians have come in here. Then I said, don't worry, 2028, again when you have the 15th year celebration, I will come here and then we will have a conversation and say, India has finally arrived here. Only on this particular confidence कि private स्कूलों में हमारे पास, I really, संजय कुमार जी ने कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अच्छा चीज़ कही थी, बॉम्बे वाले कॉन्फ्रेंस में. उन्होंने कहा एक तो हमारी तरफ एक्सट्रीम बहुत अच्छे हैं और एक्सट्रीम लो परफॉर्मिंग है. संजय कुमार जी सेड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ही सेड, क्या हम इसको बढ़ाने के चक्कर में उनको इस तरह ना खींच लें, उनको वहीं रख के और अच्छा करो और इनको ऊपर लेकर. तो हमारा जो मिनिमम बेंचमार्क है, कैन वी इंप्रूव दिस पर्टिकुलर बेंचमार्क? And just for people who may not know, Mr. Sanjay Kumar is Minister, he's Secretary Education, Ministry of Education. I loved his statements. He said, we need to improve the minimum benchmarks. Let's improve. And this can be done only at school level, not at a policy level. Policy level, khali a circular can come. Only a circular can come. Policy level changes cannot be. It has to be brought at the teacher level, and uske liye soch is very, very important. Not only this, look at every other statistic. Mathematics, एक area लिया, I have not got into detail. But look at the whole thing, how much it is trying to go ahead and work on it. We don't bother about immigrants and non-immigrants. Luckily in India, we are still don't have that kind of a problem, which is still visible. But rest of the world has. They are trying to track even immigrants versus non-immigrants के बीच में भी क्या learning levels कैसे हैं. They are trying to tack on such data. But this is the report which came out as part of that particular follow-up, and this statement was fantastic. What it talked, pandemic has brought home that learning is not a transactional process. ये खाली लेने देने वाला काम नहीं है. इसमें social and relational experiences. Look at that second part, which is very, very important. It was not कि आपने कंटेंट को PDF बना के कोविड में दे दिया. No. कई लोगों को, बच्चों को मालूम था, हमने सोचा हमें टेक्नोलॉजी अच्छी आती है, बच्चों को हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे. उन्होंने जब एक्टिव रहते हैं स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया और उस स्क्रीनशॉट को लगा और चले गए. और हमको लगता है बच्चे सारे अटेंड कर रहे हैं. स्कूलों में हमने एक प्रैक्टिस शुरू की थी. क्या प्रैक्टिस शुरू की थी? अटेंडेंस के लिए सारे बच्चों को आते ही स्क्रीनशॉट लो और अपलोड कर दो. अब स्क्रीनशॉट तो ले लिया, अब वो लाइव थे बच्चे या उनका, हम सोचे कि हम बड़े शाने हैं, बिकॉज वी थॉट दैट कि हमको गूगल फॉर्म आने लगा. करेक्शन का टेंशन नहीं, एक्सेल में रिजल्ट आ रहे थे. लेकिन उसी बच्चे को यह भी मालूम था कि जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, कंट्रोल यू प्रेस करते ही सारे के सारे आंसर बाजू. यहां पर कई लोगों को नहीं मालूम है ये पॉइंट, अभी भी बच्चों को मालूम है.
जैसे ही गूगल को ये पता चला, गूगल वालों ने बड़े स्मार्टली काम किया, अब वो कंट्रोल यू वाला ऑप्शन निकाल दिया। लेकिन बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट। 5 लोगों का ग्रुप होता था, क्लास में हर डिसाइड करते थे पहले टेस्ट में आप फेल हो जाओ तो जैसे तुम सबमिट बटन प्रेस करते हो सारे आंसर आ जाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लो, पैरेलल व्हाट्सएप ग्रुप में दे दो। अब बोलो बच्चा स्मार्ट है, हम स्मार्ट हैं? वो तो हम समझ रहे थे कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, हमने टेक्नोलॉजी को कर लिया। सॉरी, इट इज नॉट लाइक दैट। बट व्हाट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाज people missed out. One of the very interesting learning for me as a teacher, as a practitioner, was when I went to Rajkot in one of the schools which we work with, when a senior teacher walked up and said, "Sir, पूरा स्कूल में मतलब खलबली मची हुई है." I said, "क्या हुआ?" She said, "We are able to see a difference in the child's behavior post-COVID." एक बच्चे ने जाके मेरे से रिक्वेस्ट की, "Can you tell my parents not to compel me to go out on Saturday evening and Sunday डिनर पे मत ले जाने के लिए उनको आप बोलो, मैं बोलता हूँ नहीं सुनते मेरी बात." Because Rajkot has more of business community people, and these people, they finish the job at 8:30, they come home on a Friday 8:30, they take the whole parivar to eat ice cream at 12:30 in the midnight and then come back, and the child is not able to study. So there is a behavioral shift. जो बच्चे एकदम silent होते थे, they became aggressive, and you might have read in newspaper. I don't have to talk much about it. So post-pandemic, there has been a huge shift. So we really need to be very, very clear. The second part, education, is also about emotions. This is a report which has been published. I share this report, and I think the organizers can share with you. Fantastic report, how to have SEL strategies in the classroom, again based on data done by OECD. कभी कभी क्या होता है कि when you are trying to talk about learning across the world, you need to only look at one organization which has done good job in this particular space, rather than you trying to sit back and doing research. It's not important. So what's very important is this basically talks about socio-emotional skill, latest evidence on teachability and impact on life outcomes. The number of students committing suicide, the number of students getting ignored by the community, the students themselves are ignoring. All those challenges is something very, very important. So if we want to build a resilient learning community with the lessons from across the world, we really need to be first starting with this. We really need to be flexible and adaptive. Flexible and adaptive education system is something which we really need to look for. What is this flexible and adaptive system? And I think you don't have to go and look at it. So what is the learning which we have taken across the world? And I think this is very, very important is this image. We can do lot of what we mean as track changes. And this is where these track changes, when we try to talk about in India post new education policy or national education policy 2020, I think 5 plus 3 plus 3 plus 4 is a fantastic move. Because this basically talks how exactly the problems which we were facing inside the system, we were not able to say. Most of the schools were starting from first. And the teachers in the first standard had always the challenge of managing the children in that particular case. And somehow I think the joke also might have come because of that particular reason. जब 12th में किसी माँ को बुलाया गया कि मतलब 12th के टीचर को पूछा गया परफॉर्मेंस क्या वो बच्चे का खराब है, तो बोला 10वीं वाले की है, 10वीं ने 8वीं वाले को बोला, 8वीं ने 5वीं वाले को बोला, 5वीं ने तीसरे को बोला, तीसरे ने फर्स्ट को बोला, और फर्स्ट ने प्री प्राइमरी टीचर्स को बोला। जब प्री प्राइमरी टीचर ने पूछा ये क्या चल रहा है, सारे सबको साथ बढ़ गया, तो माँ को देखा गया। अब माँ प्यार से कह दे पूरा का पूरा बाप पे गया। Somebody needs to take the ownership, and FLN, Foundation, Literacy and Numeracy, is a fantastic document to show the progression, how beautifully the progression is working. I'm not sure, यहाँ पे काफी किस, how many of you are from the primary section? Just raise your hands. Yeah, okay. So we have around 50%. How many of you have gone through the FLN document and 113 criterias? No, na? जाके पढ़ो। कभी कभी क्या होता है, ये पॉलिसी जिसके लिए जरूरत होती है वो नहीं पढ़ता, उसके अलावा बाकी सारे पढ़ते हैं। यदि आपको एक अच्छा फर्स्ट 5 years का फाउंडेशन देना है तो वो 113 आइटम्स को 113 वर्कशीट्स में आप बदल लो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी 5 साल में।
113 divided by 5 years, simple mathematics, because those are 113 skill items or learning outcomes which needs to be achieved. Now, why I am talking about this is you really need to be very, very clear on what you are going to do and how you are going to do. Otherwise, you will not be able to understand that. The same thing is at the 4. Last 4. Yes, because the career choices need to be made after 8th. In most of the international assessments, this is how it's been done. Singapore Examination and Assessment Authority, SIA, does the same pattern for last 4 years. Finland, after 9 years, after first 9th standard, they introduced vocational stream and academic stream. So now we really need to look at it. Why are we trying to talk about it? In the country, first time we are trying to talk about a compulsory age of how many? 6 years to be there in the first, only to ensure that 15 saal mein 10th. Because globally, the basic education gets completed at 15 years, 5 months. That's where the PISA assessment is also done only for 15 years. And the whole assessment is based on learning outcome, which is nothing but extrapolation of the concepts to different environment. ये आपको मान के चलना है. Whether you like it or not, 5 plus 3 plus 3 is a fantastic move. The second time, anytime, anywhere education. What is that anytime, anywhere education? Maybe with the kind of design of school education to the higher education, whatever we are trying to look at it, the transition between the regular school to a hybrid school model also may come. Today I was quite surprised. Last month I was in Ludhiana, and in Ludhiana I heard that lot of play schools, they are also running tuition centers for the international students who are studying across the world, particularly Canada and Australia. So these children, for the visa purposes, there is some 9 months they need to be in India, go back. There are some norms which they are supposed to follow. So the education should not be wasted. So they bring the children here to a class. So evening may attend a regular class of the, with the other children, go through the education system, what is required for them, and then go back and get aligned to that. The same thing will happen post in Indian scenario when we are trying to talk about something very, very important. The third area is vocationalization. Many of us have still not understood this particular whole concept of bagless days. When I try to look back and do a little more research, these bagless days, where the bagless days, where I think our Honorable Prime Minister, he made a very interesting thing on a bootstrap budget. The child should be able to get out, घर से निकले 15 दिन बाहर घूमे वापस आए. That was actually internship that he or she should be able, and that's supposed to be done between 9 to 12, which is nothing but 15 into 4 years. 60 days the child will get the exposure for different vocation, what interests him. If this has to be done, then 5 to 8. Then 5 to 8, you are supposed to do 10 bagless days. Those 10 bagless days, my definition, maybe there can be differences on this. My personal experience and worldwide learning is that 10 days you are supposed to expose the child in 150 kilometers of your school. What are the different vocations which are available? तो हर महीने एक दिन आपको बाहर ले जाना है, एक वोकेशन लोकल आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा को एक्सपोज करना. And when you do that, then you will be able to appreciate how this concept, because you are exposing 10 bagless days into 3 days, which is 30 days. 30 vocations का आपने exposure दिया बच्चे को. 30 vocations का. अब child will decide in grade 8, उसका अपना personal score, उसका assessment, and exposure to 30 different vocations, he should be able to make a career choice at 9. That was the belief system with which the whole design was done, but how many of us have actually understood this point? We are somewhere at 2% or less than 2% when it comes to vocational, and the government is quite aspirational. By 2030, we should have 50% of people getting into it. That's a good aspiration, but still we really need to know, because if all of us sitting in this particular room, how many of us even respected that SUPW period in our schools? Forget about vocationalization. SUPW का इतना अच्छा पीरियड होता था, क्या हुआ वो? Some useful periods are being wasted. साइंस एंड मैथ्स वाले एक 2 पीरियड पोर्शन कंप्लीटेशन के लिए हमने लेना शुरू किया, and we actually ran out of the whole thought process.
So that's something which we really need to look at it. The next important point which country is going through, and I think it's very interesting, is National Credit Framework. When we try to talk about the National Credit Framework, I don't know, circular तो अभी आके 1 हफ्ता 10 दिन हुआ है. I don't know कितने लोगों ने उसका प्रिंट आउट भी लिया है अभी तक. लीजिए, पढ़िए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होता है. अभी तक हम खाली एलओ को ही रिफाइन करने में लगे. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एलओ 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 एलओ. क्या एलओ पता नहीं है. और एलओ फर्स्ट पेज में होता है, पूरा लेसन प्लान लिखा जाता है, असेसमेंट लास्ट पेज में होता है. तो आपने किस लिए वो एलओ, क्या अचीव हुआ है कि नहीं हुआ. मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी अगले लेसन प्लान खोलेंगे जब भी आप करेंगे, तो जो आपका लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जिस किसी भी स्टेज में हो, जहाँ कहीं भी आप एलओ लिखते हैं ना, उसके बाजू में असेसमेंट भी लिख लीजिए. आपका लेसन प्लान मीनिंगफुल हो जाएगा. Try this, because if you are not able to see something, you will never be able to design something around that. That's going to be very, very important. So National Credit Framework and Academic Credit Bank, which ABC, which are Bank of Credits, which we are trying to talk about, will be a game changer in the country, because that will get connected to the last point, learning world to the world of work. Today, that child who has gone through 10 bagless days every year for 30 days, 15 days of internship in one of the choices of his areas, into 4 years, that is 60 days. So 90 days the child is actually getting into a job, what vocation, what he loves, likes. And based on that, he is going to make a huge difference, and that's what is the expectation. All this can be done only through digitization. हमारे यहाँ पे डिजिटल नाम की जो चीज़ है ना, सॉरी टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ है, उसके लिए खाली आज भी हम खाली वो ओवरहेड प्रोजेक्टर से लेके एलसीडी प्रोजेक्टर से लेके, थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर कंपनी विच डिड अ वेरी गुड मार्केटिंग इन इंडिया, जिन्होंने कहा कि आप टच बोर्ड, मुझे मालूम है यहाँ पर भी कई टीचर या कई ऐसे स्कूल होंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था, डिस्क्लेमर है, हंसना नहीं, आपके स्कूल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जिन्होंने स्टाइलस पेन दिया उन्होंने बोला ये 2500 का पेन है, तो टीचर ने उसको पेन को यूज करना ही बंद कर दिया. फिर मेरे को किसी टीचर ने बोला क्या कर रहा है, बोला छोड़ो इसके लिए इतना क्यों खरीद, मेरे को पेंसिल है वो रबर वाली, तो बोला हाँ लेकर आओ. तो उनके सामने लेकर आए, रबर को जिस तरफ पेंसिल है उस तरह से लिखवाना शुरू किया. टीचर बोल सर ये तो हमारे पैसे बच गए 2500. मैंने बोला पहले इसको अंदर रखो, लोकल चीज को देखो, देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट. टेक्नोलॉजी इज स्टिल कंसिडर्ड एज एन teaching learning tool. No, it needs to go beyond, and that's where this particular thing has to happen. What it needs to happen? From digital transition to digital transformation. And I'm sure Bhaskar gave you sufficient gyan on transformation yesterday, so I'm not going to touch on it. Right? So what it basically means, that we have to move, and if we have to move, then we have to start looking at something like this. My recent visit in November to Korea, this is something called as the future classroom of Korea. In this particular classroom, every government school has, some of the classrooms have been designed, not all classrooms, some of the classrooms are designed like this. Now, if you are able to see on the top, this is the teacher's board, whiteboard. This is going through this particular thing, and this is something which the teacher is trying to play with her mobile. Now, every table you can find these blocks. This is blocks which is given by Lux Robo. One of the companies there, they have a product called as Modi, and that particular product is kept here. They have the screen which is the same content, what is getting there is coming here. Now, you try to talk about coding करते ना, ये सारा का सारा classroom में the teacher is using in history how the coding is getting used. AI in all subjects. Coding in all subjects. Coding is not only a math or a science related thing, even in social studies, how it could be done is something which is getting used in this particular classroom. So what does it talk about? That countries across the world have adapted, moved. Today they are trying to talk about digital textbooks, not PDF textbooks, PDF books. They are only talking about digital books. If you touch something, you are able to get, and they have a 3 years target to complete this particular textbook. They have just completed 1 year. Some sample books we had the chance to see, where you touch on suppose if the child want to know what a rocket does or what a spacecraft does, so they just touch and it comes on the screen and people are able to actually appreciate. So what does this talk about? This talks about the future.
classroom. And when we try to talk about the future classroom, we also need to understand they are not only talking about technology. This is something which all of us have. What is this? Hydroponics. जो आजकल हम लोग स्कूलों में सैंपल के लिए, जैसे मैंने बताया ना सफ़ेद हाथी वाला कहानी, वो वाला कहानी है. आप ये तो बना सकते हैं हर स्कूल में, लेकिन इसी चीज को क्या आप मॉनिटर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और डेटा से? देयर इज अ डेटा विच इज गेटिंग कलेक्टेड. व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एट व्हाट पर्टिकुलर टेम्परेचर लेवल्स. एग्रीकल्चर स्टिल एग्जिस्ट, but it is integrated with technology, and that's nothing but the smart farming. In a small community center, they have established this particular in one single room, no huge facility required. One single room, they have converted that into agriculture space, and they have said how the whole thing can be done, marketed and sold. Now, this is where what we are trying to talk about is that future learning spaces are going to be moving, or technology-enabled places are going to be looked at. So, the interesting research, जब टीचर से पूछा गया across the world, आप ये बताइए कि कितना ट्रेनिंग चाहिए post COVID. So, people have said this particular 1 in 5 person has already said that they need more training when it comes to technology. Technology is not something like this. And my question to most of the technology companies when they come and meet me, is your product like WhatsApp? All of us never went for any tuitions for WhatsApp. But we understood, and WhatsApp also understood us. यदि स्कूल में इंग्लिश डिपार्टमेंट का एक फॉर्मल ग्रुप है तो माइनस एचओडी एक इनफॉर्मल ग्रुप है कि नहीं? सच बोलो. हाँ, मैं मालूम मुझे है. अच्छा, ये इसी रूम में बैठे हुए हैं. अच्छा, ठीक है. So what is very, very important for us to understand is WhatsApp also understood that you can post something and withdraw something. पहले किसी एक ग्रुप में कमेंट मारने के पे गलत, उसी ग्रुप में गलत कमेंट मार के बोलते थे सॉरी रॉन्ग विंडो. अब व्हाट्सएप वाला भी समझ गया आपको कि रख सकता भाई 2 घंटे तक तो आदमी को रियलाइज हो जाएगा, इसलिए मूव कर ले. सो व्हाट इज इट बेसिकली? सो व्हाट टीचर्स हैव सेड दैट दे नीड इंप्रूवमेंट. सो दैट टॉक्स अबाउट व्हाट? डेटा. आज हमें अक्रॉस द वर्ल्ड क्या सीखना है कि डेटा एंड डेटा लिटरेसी. एंड व्हाट इज दिस डेटा आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट? नाउ दिस इज द सफल रिपोर्ट्स. ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस रिपोर्ट. दिल पे हाथ रख के हाथ मत उठाना, इज्जत का सवाल है यहाँ पर जो मैं पूछने जा रहा हूँ. इसके बाद कितने लोगों ने एक्शन प्लान बनाया? इसके बाद यदि बनाया तो इस सेशन के बाद मुझसे मिलो और अपना एक्शन प्लान सबमिट करो. सीबीएसई को नहीं, वो फॉर्मेलिटी आपको जो करनी करो. मेरे को सच बताओ कि कैसे किया था, एक्शन प्लान कैसे बनाया. क्योंकि आफ्टर दिस रिपोर्ट केम इन, सो मच ऑफ डेटा केम इन, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है. कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आया, लेकिन किसी एक स्कूल ओनर ने परसों जब मुझसे बात की तो मेरे को बताया सर ये सब तो ठीक है, सेंथिल ये बताओ इसको क्या करना है करके. वो बोलता है हम अपने आप को कितना झूठ बोल रहे थे 10th एंड 12th के मार्क्स को रखकर. पायलट, दिस वाज ओनली अ पायलट प्लीज. And as per NEP, in the old document, it very clearly talks about school report card. If school report card is this and you are expected to put it on your website, क्या होगा? बड़े बड़े फ्लेक्स वाले की दुकान बंद हो जाएगी. फ्लेक्स पे चला रहे थे स्कूल को, अब फ्लेक्स चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डेटा वहां पर नजर आएगा कि आपके बच्चों की हालत 1 लेवल कम है या 2 लेवल कम है. So please understand, data is going to play a very important role. Not only this, look at this data. This is a PISA data. PISA जब स्कूल, PISA for schools का डेटा आता है तो वहां पर ये डेटा आता है. वहां पर ऊपर देखिए कि क्या हालत है स्कूल्स की. ऊपर देखिए स्कूल्स की क्या हालत है, लेकिन what is very important, which is missing in most of the vertical assessments in the country, is this particular part. Cognitive हर कोई बताता है, सोशियो इमोशनल कोई नहीं बताता. एंड आई विल टेल यू कि जो नीचे वाला जो बॉक्स है, थाईलैंड हैज टेकन दिस एज एन इनिशिएटिव टू reduce the number of students getting into drugs and other antisocial elements using this kind of a data. The most of the policies what we are trying to talk in the country are connected based on such data. So data is going to play a very, very important role. This is one report card.
And that's what PISA for schools is also going to do in country, that you will get a data which is specifically coming on the socio-economic, cultural setup of your school, compared only to those schools which are of similar nature. You don't have to look at it. There's a separate band which comes in. Let me know, I'll share the report copy with you. You should be able to understand. And my suggestion is, आप जाके अपने मैनेजमेंट को बोलो एक चीज करने के लिए, डेटा लिटरेसी हर टीचर को आना जरूरी है. And my topic, to be very frank, I have said for all my conferences from 1st of January, I'm going to take school's suffer report like this on screen. I'll show you how to develop an action plan. This is 1 year's agenda, which I have taken at my personal level. क्योंकि आज ये हमारे पास मालूम नहीं है लोगों को डेटा के साथ आगे करना क्या जर्नी. We are just collecting data. लेकिन उस डेटा को आगे क्या करना है? And that's what we did with COVID also, no? जैसे किसी ने बोला मेरे को कोविड हो गया, स्कोर क्या है? 95, 65, हॉस्पिटल नहीं गया, गाढ़ा बना के पी ले, ये पी ले. We became advisors without even understanding what the data was trying to say. इससे पहले कभी डेटा के बारे में बात किया? इससे कभी जो एसपीओ मीटर कभी घर पे खरीदा? नहीं ना. सडनली बीपी मशीन आ गया, सारा का सारा हॉस्पिटल घर पे आ गया, सिलेंडर तक लोगों ने लेके रख लिया. डेटा कितना इंपॉर्टेंट आप पता चल रहा है? That is what is going to be the future, and in education too. This is not my data. This is CBSE website data. I don't know how many of you from the up to grade 5 have actually downloaded CBSE reading app. कुछ नहीं, मैं अभी आपके सामने यहाँ पे खोल के दिखा दूंगा कि आपका स्कूल की हालत क्या है करके रीडिंग. ये मेरा नहीं है, ये सीबीएसई का वेबसाइट का डेटा. So what I am trying to talk about, not only this, look at every data, everywhere data is going to play. I am quite happy that CBSE has taken such an initiative. And I still remember when I had the first conversation with some of the officials at CBSE, and I think this was 2 years back, when there was an initiative, Padega Bharat, some initiative was there, 100 days reading challenge वगैरह कुछ था. तो मैंने भी बोला था सर डेटा कहाँ है इसके लिए. I normally ask this to many friends in CBSE and ICSE and other boards. तो मैंने उनको पूछा था तो ये क्या कर सकते हैं. So this was one of the output of such conversation, meaningful conversation. I'm quite happy the company like Freedom, which has come forward to basically work on this particular area, and up to grade 5 free में मिल रहा है यार. Why are we still stuck with somebody? काफी लोग आज भी ये बोलते हैं मोबाइल को दूर रखो. आज सवेरे while coming to this particular conference, I was calling somebody in Kavardha, a school called a school जिसके साथ मैं काम करता हूँ. उसके एक टीचर ने पूछा कि सर मैं क्या टेक्निक करूँ. मैंने बोला टीचर बच्चों को मोबाइल यूज़ करने देगा? बोलूँगा सर मैं ट्राई करता हूँ. तो मैंने बोला वॉइस नोट्स बनाओ, वीडियो नोट्स बनाओ. इन्फोग्राफिक्स का ज़माना गया. आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है. ही वुड लाइक टू हियर अ वॉइस ऑफ हिज. हम रीडिंग अलाउड की बात करते थे, अब वो रीड नहीं करना चाहता, तो उसको कम से कम एक बार रीड कर ले भैया जोर से. बाद में ये पसंद नहीं है, तेरे को तेरा चेहरा पसंद है, सब टिकटॉक बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं. लगा मोबाइल सामने, अपना चैप्टर पढ़, अपने स्टाइल में पढ़ और देख, समझ. Now this is what is going to change with the data and technology. So technology, not only this is coming up. सर ये तो ठीक है, इसको लोग क्या करेंगे, फटाफट एक्सेल में बदल लेंगे. मुझे मालूम है क्या क्या किया हमने पहले. इससे पहले भी जब आया था CCE तो हमने क्या सर्कस किया था, सबको मालूम है. तो ये रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है, लोगों को मालूम है, सबने देखा भी है. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम, बट आई वांट यू टू लुक एट हाउ मच डेटा इज गेट टू बी कलेक्टेड हियर. पीयर असेसमेंट पूरे साल. सर पीयर असेसमेंट कैसे होगा? सर प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में 30 मार्क्स जो होता है उसको, वो 20 या 30 मार्क्स जो होता है इंटरनल असेसमेंट, उसमें किसी को 19 से कम नहीं मिलते हैं. तो पीयर असेसमेंट खाक होगा इधर. This is where academic credit bank will get connected to this, and it is holistic in terms of child doing the assessment, self-assessment, peers, teacher, parent, and look at the report card you get. All this will require data, and this requires something called as holistic progress report. They have mentioned the levels, what is at what level, and this is what will be the start point of going beyond number. न्यूमेरिकल डेटा से लैंग्वेज डेटा में बदलना बहुत बहुत जरूरी होगा. आप चाहें या ना चाहें,
जितने भी यदि मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स बैठे हैं यहाँ पर, अपने टीचर्स को अभी से मोबाइल यूज़ करना परमिशन दे दो, नहीं तो कल वो बोलेंगे हमने बोला था ना दे दो हमको, आप इतना ड्रामा कर रहे थे। क्योंकि अब एनेक्डोटल अपलोड करना है। यदि आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड चाहिए तो कुछ ना कुछ फोटो होना जरूरी है, लेकिन बाद में खाली क्लासरूम में फोटो मत लेते रहना, क्योंकि कई स्कूलों में ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक एक्सपेरिमेंट करता है बच्चे के साथ, दूसरा बोलता है फोटो लो, तो पूरा नेचुरल नहीं लगता है वो। तो इट इज ओनली टू कलेक्ट एविडेंसेस ऑफ learning, and evidences of learning need not be only photographs, it can be anything else, and that's what this report card is talking about. This is again something which I know of a small company which has kind of done, and these guys, they have talked about, जब एक report card आता है एक स्कूल में, एक parent teacher meeting होता है, तो टीचर्स को ये भी मालूम नहीं होता उस बच्चे के पूरा का पूरा इतिहास। Now this is again a very very interesting thing which I saw in this particular organization, जहाँ पर they will just show you how exactly in grade 8 A section there is a student by Arush, and Arush का parent जब मैं उसके सामने आके बैठता है तो he gets a complete my 360 report card. अब इसमें जो interesting चीज़ें आप देख सकते हैं, term 1, term 2, I'm going to skip this fast. Term 1 and term 2, okay, term 1 and term 2, and you will be able to see that term 1 का जो result है या term 2 का result है, that teacher can click. The same dashboard is available with the principal. The principal also can understand कि cycle test कौन सा cycle test है। उस cycle test के अंदर if I try to look at one particular subject, I would like to look at the percentage and the grade. तो child को chemistry में D मिला है, so I can go and click on the chemistry and try to find out कि उस पर D कैसा। I can click on the chemistry, I can get into detail. Like this particular case, they have put chemistry, okay, and then you can see D कौन से टेस्ट में है। रिटर्न बच्चे का रिटर्न काफ़ी वीक है। Now until unless you have technology, I can tell you, you will never be able to get this on. आप कितने भी एक्सेल के गुरु हो जाओ, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स इस तरह, एंड जो एक टीचर का डेटा होता है वो दूसरे टीचर को नहीं मिलता। एंड आप लोगों को मालूम है, जो वीक होते हैं, जो सबसे अच्छे होते हैं, इन दो सेगमेंट्स में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो बीच बेचारा आयाराम गयाराम होता है, उस पर पेरेंट्स पे कोई बात नहीं, साइन किया चलो जाओ नेक्स्ट। If you have such technology tools to get into scholastic and co-scholastic, you will be able to appreciate this, to take it forward. I'm not getting into detail, some other day, not today, some other day we will kind of spend time. Can you believe where is this particular school? This is in Maharashtra, 28 kilometers away, and this is a Jilla Parishad school. This is a Jilla Parishad school. हमें जाना है फिनलैंड? ये है ना, ये भी स्कूल है ना, वाबलेवाड़ी सरकारी स्कूल है, जिला पंचायत स्कूल। 350 बच्चे हैं, सॉरी 458 स्टूडेंट्स एंड 3.5 टीचर हैं स्कूल में। एक पार्ट टाइम में आके जाता है ना दूसरे स्कूल से, शेयरिंग में होता है। हमारे यहाँ नंबर होता है ना परसेंटेज पे। परमिशन नहीं मिला इसको हायर सेकेंडरी स्कूल का। यहाँ पर आप रीजियो एमिलिया, जब मैंने प्रिंसिपल से जाके पहली बार, जब मेरे को किसी ने बताया, मैं स्कूल गया तो मैंने जाके देखा कि स्कूल में किया क्या है। देन ही हैड अ ग्लास ऑल अराउंड द क्लासरूम। तो मेरे को लगा ये ग्लास में करता क्या है यार, ग्लास में तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमारे यहाँ सारे कर्टन लगाने पड़ते हैं बच्चे बाहर ना देखें करके, ये ग्लास लगाया। देन आई अंडरस्टूड दैट इन रीजियो एमिलिया देयर इज अ कॉन्सेप्ट, लेट ब्रिंग द एनवायरनमेंट इन आउटसाइड इनसाइड, दैट मीन्स ब्रिंग द आउटसाइड थिंग इनसाइड द क्लासरूम। एंड इस एक स्कूल में मैंने देखा कि एम्पावरमेंट कैसे हो रही है। So you don't have to look at a learning space going outside the world when technology and other things can happen. Here there is something called as, if the teacher can create an environment, look at, you don't have to go to 3 Idiots and all, वो कहानी है। Go and see a real time scenario जहाँ पर बच्चे were not even bothered what I was taking photograph of them. They are working on a windmill project independent of those thought process. Next, जैसे मैंने बोला वहाँ पे टीचर्स के साथ प्रॉब्लम काफ़ी कम है in terms of teachers. There is only one external person you can see who is sitting here. He is an external senior student who is taking, it's a music class, and people are fiddling with the music instrument independent of this senior student. There is no teacher in the classroom. This is what is empowerment. This is what is peer learning all about. Not only this, we really need to look out outside. आउटडोर बोलते हैं हमें सबसे पहले ये नजर आता है, लेकिन आउटडोर में कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं। और इसके लिए आपको
खर्चे की जरूरत नहीं है, एक फ्लेक्स बैनर लगाते हैं ना, इतने रैंक आए हैं, उसको निकाल कर इस डिजिटल चीज को प्रिंट करवाइए, और नीचे क्या है, वो पट्टी कौन सी है पता है, इलेक्ट्रिक पे जो लगती है ना शीट, वो पट्टी है, पट्टी के साथ मैथ सिखाया जा रहा है। एंड इफ यू वांट टू नो मोर सच थिंग्स, गो बैक, कॉल्ड एज बाला, BALA, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड by Kabir Vajpayee. Please try to procure that particular book and start looking at your school building as a learning aid. You'll be able to look at quite a lot. Not only this, this is a school in Chennai, Bala Vidya Mandir School, Chennai, where they have put the complete house की wiring कैसे होती है, ताकि बच्चे को जो लाइफ स्किल की बात करते हैं, because this is what I saw in Finland as something called as home economics. And when I come back to India, I see this already happening in Indian school at Bala Vidya Mandir. Not only this, one of the problems for us when we're trying to talk about skill shortage, this is something which is interestingly being done in the same school. एक पर्टिकुलर जगह पर उन्होंने पाइप लगाकर सारे के सारे कमोड एंड नौसल के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको चारों तरफ बना के रखा हुआ है, एंड पीपल गो देयर एंड रिपेयर देम इंडिपेंडेंट. ये होता है एक्चुअल वोकेशनलाइजेशन इन द रियल सेंस. बस कहीं पे हमें ये नंबर के चक्करों में, ग्रेड के चक्कर छोड़ के, दिस इज समथिंग विच वाज डन अर्लियर थ्रू SUPW डेज, नॉट नाउ. सो वी शुड अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज कि हमारे पिछवाड़े में काफी काम हो रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, एंड वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिटी एंगेजमेंट. सो व्हेन यू ट्राई टू टॉक अबाउट कम्युनिटी एंगेजमेंट, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट. दैट्स द पंचायत प्रेसिडेंट इन वाबलेवाड़ी स्कूल हु इज टेकिंग क्लास फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज उनके पास टीचर्स नहीं है, उनके पास टीचर्स नहीं है. एंड व्हेन आई मेट दिस पर्टिकुलर दातावारे, द प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल, अ वेरी नाइस जेंटलमैन, again he is thrown out of the whole system today. Unfortunately, he is out of the game because of whatever political reasons. But what I am trying to say is that he is able to actually make the whole school, जो भी आपने वो कंस्ट्रक्शन देखा ना, गांव ने 3 साल तक मेला नहीं बनाया, विलेज फेस्टिवल नहीं हुआ, लोगों ने अपने अपने घर में फेस्टिवल किए, विलेज फेस्टिवल नहीं किया. विलेज फेस्टिवल के पैसे से उन्होंने वो सेटअप को किया, और वो जो सेटअप है सरकारी जमीन पे नहीं है, वो गांव वालों की जमीन पर है, because you need permissions and approvals. Now this is something just to give you the idea ki how the community gets engaged. Now we try to talk about this. This is India. This is Korea. We don't know in next Olympics we will have esports coming in. We are telling students not to play on mobile, but there is a country which has created a classroom in a community center where people can come and have gaming so that they can participate in Olympics. वो अगली बार होगा या उसके अगली बार होगा पता नहीं, लेकिन the country is already getting prepared through a common community center. So if you have to have a learning space resilient, then you really need to be keeping in pace. And the most interesting thing is that they have created everything on Internet of Things, not only in this, and this is just happening in a very small place. Look at, they don't have a big infrastructure. This is just outside a school in a community center, this has been established. This is nothing but a replica of Atal Tinkering Lab in India. Atal Tinkering Lab may be just one of the components somewhere, I can say Maker's Lab, you can see somewhere here. See, you have the esports lab, you have classrooms, you have drone lab. Some other day we'll talk about self-driving lab. So you don't have to go and learn on the streets, you can learn the car at the particular place. You have media content, you have a AR VR lab, digital drawing, you have a brainstorming room, you have a farm, staff lounge, office, 3D scanning, AR, VR, IoT, robot, makerspace. So this is our Atal's thought process. And cafe, auditorium, all this is a shared facility, what Atal Tinkering Lab is talking about. But we are only looking at that at one particular perspective, not more. And this particular lab is taking care of this community. ऐसे चारों तरफ है स्कूल के घर, उस कम्युनिटी के लिए ये लैब बना हुआ है, ताकि every school need not create their own lab. This is nothing but under new education policy, sharing of resources. बच्चे को अच्छा ना लगे नहीं, उधर का टीचर वहां कॉन्फ्रेंस नहीं भेजे जाते, पता है आपको? क्योंकि कॉन्फ्रेंस में एक सेक्शन होता है टी ब्रेक एंड नेटवर्किंग. वो नेटवर्किंग थोड़ा भयंकर है, टी ब्रेक तक तो ठीक है, नेटवर्किंग पता है कितनी आपकी हमारे साथ, तो जो गया कॉन्फ्रेंस में वो वापस नहीं आता, हाईजैक हो जाता है. तो आई थिंक वी रियली नीड टू बी लिटिल मोर कॉशियस व्हेन वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट, एंड दिस इज जस्ट टू गिव यू अ सिंपल पर्सपेक्टिव. नॉट ओनली दिस,
This is again a very interesting community library, which is at OD at Finland, because you need to also understand what's happening in that. So that people can pick up the books and come and sit on the glass side, and they can look at the whole Helsinki city and sit and read. And they can individually read, and there are other photos. Now there is something called Maker's Lab, which we try to talk about. So here people come and swipe their cards, do stitching. तो कोई अपनी साड़ी स्टिच कर रहा है, कोई अपने कपड़े स्टिच कर रहा है, कोई डिज़ाइन पोस्टर बना रहा है, जैसे यहाँ पे बच्चे अपना पोस्टर प्रिंट आउट कर रहे हैं, और प्रिंट आउट निकालने के बाद दे आर टेकिंग इट देमसेल्फ. सो दिस इज अ कॉमन शेयर्ड फैसिलिटी, नॉट ओनली इन कोरिया, इन फिनलैंड ऑल्सो इट्स हैपनिंग. इतना ही नहीं, इसके अलावा दिस इज द लाइब्रेरी. इस लाइब्रेरी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चों को भी एंगेजमेंट होना चाहिए. तो बच्चों के लिए एंगेजमेंट के लिए देयर इज अ स्पेस टू प्ले, एंड इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर यू कैन सिट डाउन देयर, एंड आपकी ट्रेन, एंड दिस इज नेक्स्ट टू रेलवे स्टेशन एट हेलसिंकी. So even if you have to just kind of go and if you have train 1 घंटे बाद आ रही है, so you can go and play chess का 2 गेम खेल लिया, and then you can go back and actually, and there's no control on anybody. And now this is the children play area which I was talking about, which gets created. Now why I'm saying this is going to be the new change, and that's the library. It's a shared library. It's a shared library which is kind of been dealt by them. So what I am trying to talk about, कि हमारे देश में भी there are a lot of good things which are being done and tried and tested. So we don't have to kind of look everywhere. I'll show you some Indian examples more, because it's very important for us when we have half-baked information. एक फिनलैंड ट्रिप जाकर आ गए, 2 सेल्फी ले लिया वहाँ बोर्ड के साथ, experiencing Finnish education, all rubbish. 100% rubbish. Because you have never understood the context in which that particular classroom is being kind of created. And this is just an example of that. Now, so the learning is all about, what I understand is, go back to basics. और आज हमारा basic का सबसे बड़ा problem है. So what is the way forward for all of us? First, once you go back, if you have to become a resilient, first align and adapt school curriculum. CBSE only gives you a syllabi, not the curriculum. Please understand. CBSE, many people say we are CBSE curriculum. Sorry, you are not a CBSE curriculum. You are a CBSE syllabi school, affiliated to CBSE, and that's what is important. And when we are trying to talk about this, why I am talking about this is because every school is different. Every school is different. आपका एक स्कूल रोड के इस तरफ अच्छा चल रहा है, आप एक और बिल्डिंग सामने बना लीजिए, you will not be able to do anything. Not only this, आपका स्कूल बड़ा हो गया, आपने एक और ब्लॉक ग्राउंड के उस तरफ बना दिया ना, तो यहाँ वाला टीचर ये स्टाफ रूम छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है. It is so difficult to bring in change. Forget about curriculum. So one of the things, I know that all of you have filled up SQA. Many of you might have also done 3 and 4. को 4 दिया है, 3 दिया है, ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि जब तक आपके 5+3+3+4 का आपका प्रोग्रेसिव करिकुलम आपने नहीं बनाया है, based on the environment what you are taking care of it, it is not working. And that's where beautifully APP came. APP का काम ये था, पेडागॉजिकल प्लान का काम ये था कि आपके डिपार्टमेंटल मीटिंग के रिफ्लेक्शंस को अगले APP में ऐड करके आगे बढ़ाना है. It is not control C, control V. No, it doesn't work in that particular. What is your pedagogical menu card? What is your assessment policy? What is your inclusive policy? You don't even have. Forget about anything. POXO document. POXO document अपने स्कूलों में जाके चेक करके देखो, आपने खाली कवर पेज बदल के रखा होगा, स्कूल के अंदर का डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करके रखा होगा. यदि करा है तो मेरे को सैंपल भेजो. मैं ओपनली चैलेंज करके जा रहा हूँ, इसीलिए करके जा रहा हूँ ताकि यू शुड बी एबल टू गो बैक एंड वर्क ऑन इट. बिकॉज क्या होता है कि हमने कंट्रोल, हमारे पास बड़ा अच्छा है, टेक्नोलॉजी ने काफी है, कंट्रोल F, कंट्रोल R, कंट्रोल S. मेरा उनके स्कूल का पॉक्सो डॉक्यूमेंट मेरे स्कूल का पॉक्सो हो गया. पॉक्सो के अंदर एक कमिटी होती है, कमिटी की महीने मीटिंग होती है, मीटिंग का MOM बनता है, उस MOM को मैनेजमेंट मीटिंग में डिस्कस किया जाता है. दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड देयर. वॉइस ऑफ स्टूडेंट का बॉक्स होता है, कितने स्कूलों में है?
चेक करके देखो। स्कूलों में सजेशन बॉक्सेस हो गए, लेकिन सजेशन बॉक्सेस आपके स्कूलों में जाके चेक करके देखो। एलिवेटेड डस्टबिन है, बच्चे चॉकलेट खाते जाते हैं, देखा नहीं कुछ, अंदर डाल के निकल गए, क्योंकि वो हाइट होता है ना, झुकना नहीं पड़ता आज के बच्चों को। सो दैट बिकम्स, गो बैक एंड चेक। एंड आई हैव फोटोग्राफ्स, लाइव फोटोग्राफ्स, आई कैन शो इट टू यू। जो बोल रहा हूँ हर स्टेटमेंट को आई कैन काइंड ऑफ show you with evidences. That's what is important. Second is adhere to regulatory and statutory requirement. Never mess up with this. And I can tell you, in affiliations now in Kerala, we have a lot of problems already coming in terms of occupancy certificate. Many of you might have got your building approvals, but occupancy certificate नाम की भी एक चीज़ होती है, उसमें करोड़ों रुपए का फाइन स्कूलों पे पड़ा है। तो जाके एक बार चेक कर लो कि आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द लोकल ऑफिशियल लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रूवल फॉर योर थिंग। एंड प्लीज चेक, एवरी स्टेट हैज समथिंग डिफरेंट। एंड व्हाट आवर इंटरनल रिसर्च सेज, 75 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ स्कूल फ्रॉम लोकल अथॉरिटी बेस्ड ऑन द स्टेट, इट मे वेरी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल स्टेज अप्रोप्रिएट। कहानी खत्म रिगार्डिंग द 3rd स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड। पहली बार हमारा जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है बहुत ब्यूटीफुली एज स्पेसिफिक बनाया गया है। जब वो एज स्पेसिफिक बनाया गया है तो आपको ये मान के चलना है जो 10th का टीचर है वो उसको प्राइमरी में आप फिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके स्किल सेट्स अलग चाहिए, इसके स्किल सेट्स ये अलग। यदि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है तो जाने के बाद मंडे जब भी आप अगले साल जब स्कूल शुरू होगा, एक सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी क्लास में ले लेना। 10th 12th के जितने भी हीरोज बैठे हैं ना यहाँ पे, अपने आप को बोलते हैं कि हम PG PhD, जाके एक प्राइमरी सेक्शन में एक क्लास को सब्स्टिट्यूशन करके आओ। तीसरे दिन बोलेंगे भैया इट्स नॉट वेरी इजी। सो दैट्स वेयर द पॉलिसी, इफ यू हैव टू इम्प्रोवाइज, गो बैक एंड लुक एट दैट। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, डोंट वेट। प्लीज अंडरस्टैंड, ERP का मतलब अलग होता है, LMS का मतलब अलग होता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब अलग होता है। डोंट गेट कैरीड बाय द पीपल हु कम एंड सेल यू। इफ एनी स्पॉन्सर्स हियर, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके, लेट मी, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल नो, अदरवाइज बोले क्या बोल दिया सर ने, मैंने कुछ नहीं बोला। चॉइस ऑफ वर्ड्स को जरा समझो और ये देखने की कोशिश क्या चीज है जो इंटीग्रेटेड है। स्टूडेंट का जो 12 साल का जो प्रोग्रेशन है, आई वॉज टॉकिंग टू दिस गाइज फ्रॉम एडुटाइव एंड दे सेड, एक स्कूल ने बड़ा अच्छा एक रिक्वेस्ट किया मैं सर, मैंने क्या बोला, 12 साल के जो क्लास फोटोग्राफ्स हैं हम क्या इसमें सेव करके रख सकते हैं? तो जब बच्चे का पोर्टफोलियो हम देंगे, डिजिटल पोर्टफोलियो हम 12th में देंगे, तो उसके पास बच्चे को अपना ही 12 ईयर्स में वो बच्चा कैसे इवाल्व, जब उसका आप हेल्थ रिकॉर्ड देख रहे हो तो कम से कम एक फ़ोटो भी रख सकते हैं ना सर। मैंने बोला वाह, लोग किस ढंग से सोच रहे हैं। And he wants to give this as a digital photograph album to the kids so that they can appreciate how their 12 years has been in the school. So fantastic model. So expectations are quite high. Next is, this is what is the challenge. Invest on staff. You have to become big brothers. आज काफ़ी लोग यहाँ वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर बैठ रहे हैं, कल आप भी प्रिंसिपल बनेंगे। जब प्रिंसिपल बनेंगे तो स्टाफ पे इन्वेस्ट करो, या स्कूल ओनर बनेंगे स्टाफ पे इन्वेस्ट करो। बड़ा भाई बनो, जैसे क्या होगा, आपका स्टाफ किसी स्कूल का प्रिंसिपल बन जाएगा। जब वो कहीं प्रिंसिपल बन जाएगा तो आप एक 10 प्रिंसिपल यदि आपके स्कूल से बन गए तो स्कूल में आपके दरवाजे के बाद एक और बोर्ड लगाओ, रोल ऑफ ऑनर्स 10th एंड 12th मार्क्स नहीं, प्रिंसिपल इस शहर के लिए आपने पैदा करके दिया। टेक अ क्रेडिट फॉर इट। नो, व्हाई आर यू फीलिंग शाय ऑन इट? प्लीज इन्वेस्ट ऑन योर टीचर्स बिकॉज दिस इज द मोस्ट थॉट प्रोसेस। एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज, 25 आवर्स कि करने के लिए आंख से खून निकल जाता है कई लोगों का स्कूलों में। सर वो छोड़ के चला जाए, अरे जाने तो दो ना यार। एड दैट इनटू योर व्हाट यू कॉल HR कॉस्ट, यू विल गेट फी रेगुलेशन कमिटी से बेनिफिट मिलेगा। इतना भी नहीं मालूम है कई मैनेजमेंट्स को, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो माय रिक्वेस्ट इज, जब भी कोई ट्रेनिंग होती है उसको स्टाफ टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ विल गिव यू द स्टाफ का HR कॉस्ट आ जाएगा। HR कॉस्ट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द फीस। वो समझो, वो नहीं समझते हैं आप लोग, एंड देन यू डोंट वांट टू डू इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट राइट। डेटा लिटरेसी, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डेटा लिटरेसी, आई एम नॉट गेटिंग। मेजर यूटिलाइजेशन इफेक्टिवनेस। सर बस इतनी लाइब्रेरीज आ गई स्कूलों में, लेकिन कितने बच्चे जा रहे हैं उसके अंदर? इट इज बिकमिंग अ ब्यूटिफुल ताजमहल इनसाइड द स्कूल।
लोग जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। अगली बार कोई भी टीचर यदि एक किताब खरीदने के लिए बोलता तो उसके बाजू में 2 स्टेटमेंट और लिखवाओ उसी स्लिप के नीचे, ये किताब का यूटिलाइजेशन कैसा होगा, हाउ आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस। मैंने बोला करके अब शाम को जाके सब लोग, ये कल सवेरे मंडे, ये मत बोले कबीर वाजपेयी की किताब लेना है क्योंकि डॉक्टर सेंथिल ने कहा या बाला सर ने एक किताब खरीदने के लिए बोला। नो, डोंट डू दैट. You need to understand that whether it is useful. That's why I said observe and adapt. If you're not observing, you're not going anywhere. All this is finally leading to something very, very interesting statement which I saw in one of the reports. मैंने रिपोर्ट की बात की थी, उस रिपोर्ट में बड़ा बड़ा बहुत अच्छा लिखा है एक स्टेटमेंट. I think it was something which was very, very glaring and open. What it talked about, students as a consumer of prefabricated educational content. Prefabricated. Look at the word prefabricated. That means एकदम stone में मतलब ढला हुआ. Next, teacher as a service provider. Next, parents as the client. And towards a world in which education gets shared as a shared enterprise. हम shared goal की बात करते हैं, वो सब यहीं से आता है. Towards helping the next generation to build a reliable compass and tools to navigate the confidence through a rapidly changing world. Tell them what they are good at. They will find the ways and means to go at. आपको कोई जरूरत नहीं है. मेरे को भी ये कई, sorry to just give you one example here, not mentioning any one universities. Certainly देश में एक नई बीमारी चढ़ी है. सारे यूनिवर्सिटीज़ को स्कूल से बड़ा प्यार हो गया, प्रिंसिपल से बड़ा प्यार हो गया. सारे प्रिंसिपल्स को बुला बुला के अवार्ड देते हैं. सच बताओ कितने प्रिंसिपल्स की बात कितने बच्चे सुनते हैं एडमिशन के लिए? यदि आपका टारगेट एडमिशन है तो नो. बच्चों को खुद मालूम है कि कौन सा कोर्स कर लेना है, कहाँ लेना है. टिल 9th 10th माँ देखती है भारत में, और 10th के बाद बाप देखता है एजुकेशन को. एंड दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. This is something which is very, very important. My suggestion, what I started with the suggestion is, adoption mantras are very, very simple and straight. First concept. किसी भी देश के किसी भी कोने, ही देश के किसी भी कोने से कोई भी कॉन्सेप्ट उठाओ, उसको कंट्रोल करो. पहले समझो, रिसर्च करो. रिसर्च करने के बाद देखो कि क्या वो आपके वातावरण में है कि नहीं. तीसरा, उसके बाद SEL, सोशल इमोशनल कनेक्ट में उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो. लुक एट द इमेज विच इज देयर एंड दिस इज फ्रॉम फिनलैंड मार्केट स्क्वायर में. यू कैन सी लॉट ऑफ लॉक्स विच आर देयर. दोज आर नथिंग बट लव लॉक्स. जब एक दूसरे से प्यार होता है तो दोनों के साथ में लॉक डाल के जाते हैं. अब वो कितने उसके बाद मैंने पूछा कि वापस भी आता है क्या करके खोलने के लिए, तो कोई नहीं आता. तो दिस इज, अब हर कंट्री में इसका मतलब अलग अलग ढंग से है. हमारे देश में देखा जाए तो मन्नत मांगने के लिए लॉक लगा के जाते हैं. सो कॉन्टेक्स्ट, लॉक लगाने की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट अलग है. दैट्स व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड. एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बिकम रेजिलिएंट. जैसे मैंने पहले कहा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नो नो. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी नहीं चलेगा. कितनी बार हमने जाके अपने पिछवाड़े में देखा है कि क्या हो रहा है करके. भारत में हमारे ही घर के पीछे कई चीज़ें हो रही हैं, हमारे स्कूलों के पीछे कई चीज़ें हो रही हैं, बट हमने कभी उनको देखा नहीं. हम हमेशा बाहर चारों तरफ क्या हो रहा है उसको देख के हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं. लेट मी शो यू ए सिंपल एग्जाम्पल फॉर दिस, व्हाट आई पिक्ड अप. लुक एट दिस. ये ना कॉम्पिटेंसी. Decorating body with clothes, strings, ornaments as per demand of the occasion and the place. 16. Dressing as a skill into every child, or holistic education as a child. Bhushan Yojana. There are 2 types of ornamentation. One with the combination, without combination. This is a kind of jewelry making. Right? I'm just showing you. Skill of massaging by feet and art of massaging body and hair by hands. Again, skill based program. Game of reciting verses from hearing. For sports or competition, a person recites from a scripture and other matches him without referring to the same scripture. Antakshri. Antakshri is also a skill. Go there, you'll be able to find.
Last one is techniques for victory. These are invisible and divine with the used in battle. So how do you try to work on of this? Now all these are just 60 kilometers away from the place where you are sitting right now. And they are at Sandeepni Ashram. इसके लिए आपको फिनलैंड जाना है, इसके लिए आपको कोरिया जाना है, सच जाके. I am not promoting a place. Please understand what I am trying to say. You really need to look at 14 disciplines of knowledge and 64 art forms learned by Sri Krishna. This is a book which is available, very beautiful small book. I have a copy. I also bought one. But I want to go back and work on this because something very interesting which I saw for the first time. So as I said, no, इंदौर में इस बार की learning ये भी एक है मेरे लिए. And I'm trying to go back and work on disciplines and I'm going to map with various university के साथ research करूँगा because this is something which was very, very interesting. तो इसके लिए हमें फिनलैंड जाना है, कोरिया जाना है? No. The most important thing what you are supposed to do is this. I hope पिछले 1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुछ तो होने लगा है. अब क्या होगा पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे साथ मेरा मंत्र खाली हमेशा यही है, hashtag लगे रहो, and that's what is there. That particular note, namaste to all of you, and thank you very much for this opportunity, and I hope that this particular session enlightened you with how we can make our campuses much more resilient. Thank you very much to the GTM team for the opportunity to be here and share my thoughts. Whenever you get the success, please call me. My number is there. I would like to see your APP, Safal Action Plan Report, APP, और जो भी documents हैं मेरे साथ आप POXO कोई भी document share करो. We'll have fun. Thank you very much. Thank you once again, and thank you. Well, thank you so much, sir. I would like to quote Swami Vivekananda that, yeah, education is the manifestation already exists in man. And it's really a matter of great pride and privilege for all the members present in the conference to witness such a eye-opening session from sir. It's really a matter of privilege. So I request the keynote speaker to please come up on stage along with the host team for just to present a token of remembrance to you. I request the guest of the day, Mr. Vikas Agrawal, Regional Officer, CBSE Bhopal Region, to please come up on stage to give token of remembrance to the guest of the day and the keynote speaker, Dr. A. Senthil Kumaran. Audience, please give a very big round of applause. We have amongst us Director Vidya, Mr. Sameep. I request you to kindly join us. That was really a very thought-provoking and eye-opening session today. We once again request you to please give them a very big round of applause. It's really a matter of privilege to witness such an eminent speaker in this gathering. So, as it's a great honor for GTM to have our regional officer Vikas sir here, I would request Kala ma'am, can we welcome sir now? So please, yes.
It's a great pleasure, sir, to have you, and it has really enhanced the GTM's value as well with your presence. Sir, you would like to address some? सभी को नमस्कार। आप लोगों से पहले भी मुलाकात मेरी हो चुकी है, कितने लोग मिल चुके पहले? काफ़ी लोग मिल चुके हैं और फ़ोन पे भी काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले तो